So in Multics operating system, this protection domain are organized in hierarchical fashion. So you can see here there are different rings available, right? And they are numbered from 0 to 7, right? And each ring that correspond to single domain is ring 0 up to ring n minus 1, and basically it is 0 to 7, right? Now here the privilege is like this. The ring that is innermost having a highest privilege than the ring that is on outer side, right? Means if your ring number, right, that is J, which is mentioned over here, and right now you are in ring number, uh, consider, okay, take this one only, J and I. So your J, that is your current ring, that is your current ring, and previous, that is I, right? And J number means this ring number is less than the I. Suppose this is 2 and this is 3, less than I. So in this case, your domain I is a subset of dj. Domain I is a subset of dj, means the domain j, the process executing in this domain having a more privilege or having all access right that has in domain I. मीन्स डोमेन आई में जो भी एक्सेस है वो सब इसमें इंक्लूड होंगे और नए भी हो सकते हैं, राइट? सो इफ दिस इज D3 belongs to D2, राइट? सो D2 में D3 के तो सभी राइट्स होने ही वाले हैं, एंड प्लस जो एडिशनल होंगे वो. सो दिस वे you can see the innermost ring, that is your 0, has highest privilege. तो मीन्स वो रिंग में जो भी, वो डोमेन में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी उसको सभी एक्सेस मिलेंगे, राइट? आई एम ऑडिबल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So they have a highest privilege, right? Now this system, if I consider only two ring, if I consider only two rings, 0 and 1, so this is similar to your user kernel mode or user monitor mode, whatever you want to say, right? So in this case, which one is user mode? Which ring is user mode? कौन से रिंग यूजर मोड कहलाएगी? दो ही रिंग है, 0 and 1. ये 0 तो वाली है, अच्छा दिस इज 1. यहाँ पे 0 का है, यहाँ पे 1 का है. यूजर एंड कर्नल मोड. The ring 0. Ring 0 is belongs to, So user kernel mode. नहीं पर कौन सी दो है, यूजर मोड एंड कर्नल मोड. ओके, The यू नो अबाउट kernel यूजर. is 0 and user ring 1. Yes. So kernel is what you said. Wait, kernel is Ring 0. kernel is ring 0. Yes. So kernel is ring 0 because we know that kernel has highest privilege, right? So that is a 0 and user is 1. And user is 1. Now to get the access, because user mode से kernel mode में जाना पड़ेगा कई बार, right?
So from user mode they call the process and from that they go to kernel mode और वो kernel mode में जाएंगे, right? But here also that the problem is कि मुझे जो चाहिए वो एक्सेस नहीं है, वो डोमेन में जो भी एक्सेस है वो सभी एक्सेस मिल जाएंगे, राइट? यहाँ यूज़र मोड से कर्नल मोड में आओगे तो कर्नल मोड में जो भी है वो सब आपको मिल जाएंगे. अनदर थिंग, द कंट्रोल ऑफ दिस रिंग. सपोज कोई प्रोसेस है, इनिशियलाइजेशन कैसा कुछ हुआ और उसमें उसको डायरेक्टली रिंग 0 मिल गई, देन मीन्स इट इज़ इन हाईएस्ट प्रिविलेज, वो कुछ भी कर सकती है वो प्रोसेस. So this thing also need to take care in this, and to switch the domain and to take care this thing, there are other certain things that are available in segment description, right? Because this what you can say, this is a segment address space in multics, right? कि कोई पूरा पार्टीशन है, उसमें से एक सेगमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है और मुझे वो एक्सेस करना है, देन आई शुड बी इन दैट रिंग, मुझे वो रिंग में चाहिए. सो दैट सेगमेंट डिस्क्रिप्शन, सेगमेंट डिस्क्रिप्शन, previously it has only one thing, right? That is ring number. Now to manage this thing what we have discussed, they will add another thing like access brackets, and that is two variable, right? b1 and b2, and b1 is less than equal to b2. So this is what you can say, a range kind of thing, this as access bracket, right? Then limit and list of gates, right? So this is the entry point to particular ring, right? So this thing they are managing, but still as I said that the purpose कि जो चाहिए वही एक्सेस मिले वो भी सॉल्व नहीं हुआ है, right? So we'll move to that next one, that is your access matrix, right? So we'll view this protection as a form of matrix. So this row d1 d2 d3 d4, this represent your domains, this represent domains, this column represents objects, okay? Or you can consider resource कि जिसका एक्सेस और जिस पे हम ऑपरेशन कुछ कर सके, रीड राइट प्रिंट एग्जीक्यूट likewise, right? So here I have 4 objects. Out of this, f1 f2 f3, these are files, and this is printer, okay? Now access I comma j, now you know that I and this is j, and this is entry for domain 1 f1, domain 1 f2. So we are representing the domain number with I and this column number with j. So this access I comma j is a set of operations, set of operation that a process executing in a domain I can invoke on object j. So this represent entry in access matrix, and what that entry means, it is a operation, it is a operation that the process which is executing in domain d1, the process which is executing in domain d1 can invoke on object j, right? So d1 comma f1, this is entry for that d1 comma f1. So the process which is executing in domain d1 can perform read operation on f1, can perform read operation on f1, okay? Same with d2,
The D2 can perform print operation on this printer, right? So now here कि पर्टिकुलर डोमेन में अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको मैं क्या राइट्स दूँ, दैट आई कैन राइट in this entry, particular entry, right? So this access matrix, right, it provides mechanism for defining and implementing strict control for both static and dynamic association between processes and domain, right? It is not only static कि एक बार ये फिक्स हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, नो, दिस प्रोवाइड्स अ डायनेमिक मैकेनिज्म एज वेल, एग्जीक्यूट के टाइम भी वो चेंज हो सकता है, दिस राइट्स, ओके. एंड व्हेन वी स्विच प्रोसेस from one domain to another domain, right? So what we are doing, we are one kind of, we are performing operation of what? Operation of switch on which object? एक डोमेन में से प्रोसेस दूसरी डोमेन में जा रही है कोई भी, राइट? सो वो कौन सा ऑपरेशन करेगी? स्विच ऑपरेशन. किस पे करेगी? मुझे स्विचिंग के लिए बताना है तो मैं वो कैसे बता सकता हूँ? गेटिंग माई पॉइंट. ये यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या दिखा रही है कि डोमेन D1 यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है वो, कि D1 में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है तो F1 पे रीड और F3 पे रीड कर सकती है, नथिंग ऑन F2 एंड प्रिंटर, राइट? अब डोमेन स्विच करना पड़ेगा कई बार प्रोसेस को, क्योंकि वो पर्टिकुलर राइट्स वहाँ पे नहीं है, सो द प्रोसेस नीड टू स्विच द डोमेन. तो वो कंट्रोल हम कैसे करेंगे? ऐसे ही दे देंगे कि D1 ओके D2 में जाना है, यू कैन गो. इज इट सो? Yes, you need to tell me. सिंपल है, थोड़ा सोचो. यहाँ पे मैंने क्या किया कि D1 है, F1 में राइट्स देना था तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री की रीड. अब आपको क्या करना है, D1 D2 में स्विच हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो आपको बताना है. तो आप क्या करोगे इसमें, कुछ क्या कर सकते हो? दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड टू, आई कैन से, ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ थी कि D1 था और F1 के लिए उसके क्या ऑपरेशन है वो मुझे दिखाना था, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया मैट्रिक्स जैसा कि D1 F1, और यहाँ पे जो एंट्री थी उसमें मैंने डाल दिया कि D1 F1 पे रीड परफॉर्म कर सकता है, सो रीड इज़ माई एंट्री. जस्ट थिंक. अब ये क्या है? स्विच, राइट? क्या स्विच? Yes, sir. Might be domain switching is possible.
Yeah, domain. This is domain switching, right? From D1 to D2. Suppose this is, we are taking this example. Switching from D1 to D2, that is possible, right? वो ऑपरेशन पॉसिबल है, दैट इज स्विच. तो पर ये यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा मैं? रिलेट करो यहाँ पे जो दिया है उस. लाइक टेम्पररी D1 में D2 प्रिंट जैसे कुछ कर सके. टेम्पररी D1 में D2 डॉट मतलब D2 डोमेन का प्रिंट जो हमें यूज करना है वो वहाँ पे. ये यहाँ पे कॉपी कर दो ऐसा. दैट इज वन थिंग, दैट इज कॉल्ड कॉपिंग द राइट्स. बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि उसमें एक है कि वो कॉपी कर सकते हो तो यहाँ पे स्टार आएगा. बट राइट नाउ जस्ट यही परमिशन सपोज आपको चेक करनी है कि D1 टू D2 में स्विच आप हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो. सर एक नई कॉलम बना दे तो शायद हो जाएगा. यस करेक्ट. न्यू कॉलम ऑफ व्हाट? डोमेन जो पर्टिकुलर हमें स्विच करना है वो. Yes, so you can add new domains here column wise D1, D2, D3 and D4. You can write this domain, and now D1 to D2 switch is allowed, so write switch over here. So means the process executing in domain D1 can switch to domain D2. और यहाँ पे हमने एंट्री नहीं रखी है, मीन्स प्रोसेस फ्रॉम D1 कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू डोमेन D3 एंड D4, राइट? सो दिस वे यू कैन ऐड कॉलम. सो यहाँ पे ये हो गया ऐड. नाउ ये पूरा एक्सेस मैट्रिक्स है, वो भी कंट्रोल मीन्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे सभी एंट्री मॉडिफाई हो सकती है, राइट? सो कौन सी प्रोसेस ये मॉडिफाई कर सके कौन से डोमेन में, वो रखना हो तो कि प्रोसेस सपोज ये डोमेन में एग्जीक्यूट कर रही है वो एंट्री मॉडिफाई कर सकती है और वो एक्सेस मैट्रिक्स मॉडिफाई कर सकती है, मुझे ऐसा रखना हो. क्योंकि प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन सर्टेन डोमेन्स आई डोंट वांट कि वो एक्सेस मैट्रिक्स मॉडिफाई करे. तो Sir, the simplest way will be to add another column that if it is 1, the domain can update the access table. If it is yes, 0, it cannot. yes. So the way is add another domain, that is your access matrix. This is your access matrix, and it will specify whether the process executing in this domain can modify the access matrix, yes or no kind of thing, 0 1 kind of thing. Then by checking that you can give the rights, वो rights easily दे सकते हो, right? So this is a access matrix. This is access matrix. So this thing, okay. Now allowing the control change in the contents of access matrix entry requires 3 additional operations, that is copy, owner and control.
right? These three operations are required to properly make changes in your access matrix, right? So how that is useful? Let's see. I think they missed one figure. Switch, read, write. Okay, now this one. Okay, so this is for switch that we have seen D1, D2, D3, D4, and this way you can write in switch. So the process executing in D4 can switch to D1. Process executing in D2 can switch to D3 and D4. Now here, let's first see the copy, right? Copy operation. So what copy operation state? It states the ability to copy and access right, this access right from one domain of this access matrix to another domain, right? And that access right that is indicated by this asterisk, right, which is appended to access right, so which you can copy from one domain to another domain, which access right you can copy from one domain to another domain for that particular object, not for others, for that particular object, denoted by asterisk. Okay, denoted by asterisk. And this copyright allows the access right to be copied only within the column, means within that particular object. Right, so see here, D2, the access right which you can copy, that is read for F2, and that you can copy from D2 to D3 or any other, right? So D2 to D3, I have copied that D2 to D3. Okay, so for F2, now D3 has also the read access right. Okay, it has also the read access right. Now there is one change you can see, not change, one observation, that here it is star but here it is not star, meaning what it means. It doesn't have access right. D3. D3 has access right. This is read means access right. This read, that also means access right. Sir, in D3 it has inherited the right, so it cannot provide it to someone else. Hence, Yes. it is like inheritance, that D3's permission cannot be inherited. Yes. So this is a limited copy you can say. So D2 to D3 आपने copy किया, ये copy हो सकता है, but now from here you cannot copy to some anywhere else. Right? So this is called a limited copy. यहाँ से ये copy मैंने बनाई. Another is transfer of right. So a right that is copied from I comma j to k comma j, I comma j to k comma j, column is same. Remember what I said, I comma j to k comma j. This is same, means column is same, just domain is changed. And after copying from I comma j, the access right is removed, and this action that is called a transfer of right. This is called transfer of right. Right? So what we have seen? Copy. In copy we have seen two variation. One is transfer of right
and second is limited copy. Okay. Okay, so this is about just transferring rights and all, but in dynamic uh, problem, not related to your data structure, but in dynamic problem, we require addition or deletion of rights, right? So we want some mechanism which allows addition of new rights and removal of some rights. So the owner right, अभी हमने क्या देखा, एक कॉपी वाला देखा, राइट? नाउ द ओनर राइट इट कंट्रोल्स दिस ऑपरेशन, कि कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, सो इट कैन बी डन विद दैट. ओके, सो इन दिस ओनर राइट, सपोज I comma j, it includes the owner. Let me go to that slide. So I comma j, that includes the owner right, then process which executing in domain di, I comma j has owner right, so process executing in di can add and remove any right, in any entry in column j. I comma j में ओनर है, सपोज यहाँ पे ओनर है, राइट? सो D2 can add and delete any rights from this F2 in this column, right? So see here, D2 ने यहाँ पे क्या किया, राइट ऐड किया एंड कॉपी राइट, एंड यहाँ पे एक और राइट ऐड किया. Okay, so in that particular column it can do whatever it wants. D2 here, यहाँ पे D1 owner है, so D1 owner है, so D1 with copyrights it cannot copy execute from D1 to D3 because this is not asterisk. So you require owner in this matrix. So now D1 can add or delete एनी राइट्स इन F1, वो कर सकता है. अब उसने क्या किया कि F1 जो है फॉर D3 उन्हें एग्जीक्यूट ऐड किया. सेम वे हियर, यहाँ पे ओनर राइट्स है D2 फॉर F3, तो उसने क्या किया, एग्जीक्यूट यहाँ पे रिमूव किया, राइट? यहाँ पे उसने राइट यहाँ पे ऐड किया. ओके, यहाँ से एग्जीक्यूट डिलीट हुआ, यहाँ पे राइट ऐड हुआ और यहाँ पे कॉपी राइट ऐड हुआ. ओके, सो दिस इज अ यूज ऑफ ओनर ऑपरेशन एंड दैट यू कैन स्पेसिफाई विद दैट ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट? मीन्स फॉर दैट ऑब्जेक्ट your particular domain is owner. The particular domain is owner. Okay, what you have observed in copy and owner rights, वो कैसे एंट्री चेंज करता है? what you have observed? कॉपी देखा हमने, ओनर देखा, दो देखे. They're both modified in the same column. Yes, so both this owner and copy operation, they operate on column, right? Change entries in a column, and we also need a mechanism which change entries in row, means for that domain in row, right?
So the control right is applicable only to domain object. Only to domain object. Remember this. What is the meaning of this? Control right is applicable to only to the domain object. इसका क्या मीनिंग हुआ? Sir, it can modify any file or any object, but for the same domain. Okay. Where you will write this control? ये मुझे कैसे पता चलेगा कंट्रोल ऑपरेशन है कैसा कुछ? Sir, we can add a row for it. We can add A row. Row. Think. Now think. So we are staying in the same domain, so add a column and then add like a control. You will add new column. Yes, sir. Okay. So what you said, just add a new column for domain and then I can specify control. So for owner also I should do that thing. पर हमने वो नहीं किया. No, sir. We don't need a owner for. We don't need a column for owner because domain can be owner of multiple files. Okay. So just think again. The control right is applicable only to domain object. Okay. And that domain process executing in that domain can control the process or can modify the process executing in that domain can modify the rights in another domains in which control is specified. Sir, then it will be same as read, write, or execute. We just put control in a specific block, such as D3 F2. So here I need to write control. Yes, sir, control, and then D3 will be able to change F3's permission for all. So that is related to particular object. And what I said, the control right is applicable only to domain objects. Sir, Sir, but this way we can also lock like a control on specific files. sir, we can add into domain column. Yes, you can add into domain column. As I said, that it is applicable only to domain objects. So these are the domain objects. કારણ કે અહીંયા switch operation જે હતું એ શાની માટે હતું? It is for that only because from one domain you want to switch to another domain, D1 to D2. So that's why we require switch. And control, as I said, it is applicable to domain objects. Key process, suppose if I write control over here,
And I think we had that thing as well. Yes. So if I write control here, D2, D4, so process executing in domain D2 that could modify domain D4. यहाँ पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, it can remove any access right from this domain D4, right? And as this is applicable to domain, so you need to write over here, right? Otherwise here that is for object, because here we are dealing with column, a particular object માટે છે, and this is for that domain. Domain આવી ગયું એટલે શું વસ્તુ થશે? row wise, column wise, right? Any doubt in this? Sir, but then D2 itself does not have any control over F1, F2, and F3. So how can it? Why should it be allowed to modify D4's access to those files? No, this is just example. We are right now we are not specifying કે આ condition આ operating system માટે આ condition છે, right? આપણે અહીંયા આપ્યું છે કે D2, F1, F2, F3 હમણાં નથી. Then later on we can add this. આ modify થઈ શકે છે વસ્તુ F1, F2, F3 માટેનું. So later on you can modify this thing. અને આ જસ્ટ એઝ અ એક્ઝામ્પલ. આપણે કારણ કે હમણાં કંઈ આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે પોલિસી ડિફાઇન નથી કરી હજુ કે આ આટલા ઓબ્જેક્ટ છે એના માટેની આપણે આ પોલિસી ડિફાઇન કરીએ છીએ, એના આ કંટ્રોલ હોવો જોઈએ અને આ પરમિશન હોવી જોઈએ. નો, રાઇટ નાઉ વી આર નોટ ડુઈંગ, વી આર જસ્ટ સીઈંગ ધ એક્ઝામ્પલ કે કંટ્રોલ છે કઈ રીતે વર્ક કરે છે, સ્વિચ ઓપરેશન છે તો કઈ રીતે વર્ક કરે છે, કોપી કઈ રીતે વર્ક કરે છે, and access matrix છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. So that we are right now seeing. Okay. Yes, sir. Okay. Okay, so now you can add new objects in this, a new domain you can create. So, and this is dynamically possible to add new domain, new objects in your access matrix. So it provides more flexibility. Now how to implement this access matrix? कि मुझे access matrix suppose now implement करना है. So how you can implement this? And usually this access matrix is sparse, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर एक में हर एक एंट्री होगी. Not necessary. Okay, I may have 1000 objects, but particular domain मैंने 5 objects के लिए ही बनाया है. So the remaining entries, that is empty. So the one way is to create a global table, right? So create a global table and it stores in these triplets: domain, objects, and write set. So domain, just give the objects and your write sets that you specify. Okay, this thing, if it is a domain to domain, then this can be your domain as well. This can be your domain as well, क्योंकि हमने देखा कि domain भी आ सकता है, right? So a requested operation M on object OJ within the domain DI, search table, which table? This global table. उसमें एंट्री क्या होगी? डोमेन, ऑब्जेक्ट और डोमेन एंड राइट सेट, कि कौन से राइट सेट के हैं. तो वो टेबल में आइडेंटिफाई करेगी कि DI, क्योंकि ये डोमेन के लिए है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है, एंड द ऑपरेशन इट वांट्स M, it belongs to RK. RK is what? Set of rights. कि ये डोमेन की प्रोसेस ये ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन और कौन से राइट्स है, ये सेट है.
और मुझे जो ऑपरेशन करना है m, does that operation belongs to this set rk? Means rk that can be read, write and execute. Suppose ये access write मैंने set किए है, right? And right now the operation I want to perform, that is read. So my m is read and rk is this. So your m that belongs to rk. So entry is there. If you found this, means entry is there and that is allowed. What is disadvantage over here? Sorry. This table could be large, though it is sparse, but एंट्री तो होगी क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो एंट्री है वो हम सेव कर रहे हैं. सो दैट विल नॉट फिट इनटू योर मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में वो फिट नहीं होगा, राइट? एंड फॉर सम ऑब्जेक्ट्स कि सपोज प्रोसेस ये डोमेन में है तो रीड ही ऑपरेशन है, राइट? और फॉर पर्टिकुलर डोमेन्स कि ये फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कि ये ऑब्जेक्ट्स है, हर एक डोमेन में इसको रीड ही ऑपरेशन है. सो इन सच केस यू नीड टू ग्रुप इट, अदरवाइज वो तो रिडंडेंट, नॉट रिडंडेंट आई के से, बट वो सिंपल एंट्री जस्ट इट विल इंक्रीज द टेबल साइज, राइट? सो ऐसी डिफ़ॉल्ट परमिशन है, उसका कोई यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है इन ग्लोबल टेबल, right? So that is disadvantage in this. The next is access list of what? Access list for objects means जितने भी objects है, हर एक object के लिए एक list बनेगा, right? So list for one object in each column, or you can consider each column is a list. And that consists of order pairs of domain हमारा राइट सेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो निकल गया. सो दिस इज यू कैन से वन काइंड ऑफ सेपरेशन, ऑब्जेक्ट वाइज सेपरेशन ऑफ लिस्ट. क्योंकि ग्लोबल टेबल था उसमें डोमेन ऑब्जेक्ट राइट सेट ये पूरा था. अब मैंने क्या किया कि डोमेन और राइट सेट यही रखा और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफाइन कर दिया. Okay, and this will not contain empty set, क्योंकि अगर कोई डोमेन में राइट है ही नहीं तो आई विल नॉट पुट दैट थिंग, मैं यहाँ पे रखूँगा ही नहीं. ओके, नाउ हियर इफ आई नीड टू सर्च फॉर परमिशन फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो पहले मैं क्या करूँगा कि सपोज D1 है, ऑब्जेक्ट O1 के लिए मुझे चेक करनी है रीड परमिशन है कि नहीं. सो व्हाट आई विल डू, ऑब्जेक्ट O1 है, सो आई विल चेक इन दैट लिस्ट. उसकी जो लिस्ट होगी उसमें मैं चेक करूँगा उसमें पेयर क्या है, डोमेन एंड राइट सेट. सो डोमेन राइट सेट, राइट? कंसिडर दिस वे, ऐसे है डोमेन एंड राइट सेट, राइट? एंड वी आर सीइंग M, सो डोमेन एंड राइट सेट. सो आई विल चेक ये डोमेन है और जो ऑपरेशन है दैट बिलोंग्स टू R, ऐसा मिल गया मुझे. इफ द यस मीन्स, इफ यस मीन्स दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड. इफ नॉट देन वी नीड टू चेक इनटू डिफॉल्ट सेट. हम डिफॉल्ट सेट में चेक करेंगे इफ दैट ऑपरेशन M बिलोंग्स टू डिफॉल्ट सेट, कि डिफ़ॉल्ट में ये रीड परमिशन तो हमें देनी है, राइट? इफ़ यस देन ऑल्सो यू नीड टू गिव एक्सेस. सो डिफ़ॉल्ट वाली जो एंट्री थी यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर, यहाँ पे से वो निकाल सकते हो, राइट? कि डिफ़ॉल्ट ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे रीड परमिशन तो देनी ही है, राइट? सो दैट एंट्रीज यू कैन रिमूव, तो वो लिस्ट की साइज कम हो जाएगी, right? So this is access list. So let's stop here and further we'll discuss. I think
10 or 15 minutes remaining.